welcome to Business Today Television. This is the Muhurat Trading Special Edition. I am Sakshi Batra. With me on this edition is our Managing Editor Siddharth Zarabi, and also joining in is our Editor for Markets Shell Bhatnagar. Well, warm welcome to both of you, and here's wishing you a very happy and prosperous Diwali, and to all our viewers of Business Today Television also a bright and prosperous Diwali and the upcoming year ahead. Remember, we will be welcoming the new year in this 1-hour special trading session on the occasion of Diwali, which will commence at 6 p.m. today and will conclude at 7 p.m. So the Muhurat trading will now mark the beginning of this new Samvat, the Hindu calendar year, Samvat 2081, and we do hope that this year turns out to be a blessed one in all aspects for all of you. So Siddharth, we've had a stupendous year. It was marred by all the challenges, but we proved ourselves to be a resilient country, an economy at large, and also markets as well. What is the kind of expectation that you have for Samvat 2081 with respect to the macro setup that we have right now? Well, very, very happy Diwali to all our viewers and to everyone across India and the world, those who celebrated it yesterday, and there are many, many people who are celebrating it today, and Muhurat trading is a very, very important moment for all our market participants. But as we wish everyone a great Samvat, I think 3 or 4 things need to be kept in mind. The broader macro construct, if we were to discuss, so this is going to be a very, very important month of November, and frankly, because of the big election result, the biggest of them all, which is what will happen in the United States. And the United States election is going to have an impact either ways. Just to explain to our viewers how we read this development, victory for Donald Trump could, along with all that has been discussed, also mean that the US government's attempts and the promise that has been made as part of virtually the manifesto that Donald Trump and people like Elon Musk have spoken about is government efficiency. So if $2 trillion of costs are to be cut by the US government, just imagine the impact on downstream spending within the government, and the US government is also one of the largest buyers of all manner of things, directly, indirectly, from all across the world. So that's one macro thing to keep in mind. The second, domestically, will be election results for Maharashtra and Jharkhand. And Shell, as I come to you to expand on that, I really think, Sakshi, Shell, that as far as the markets are concerned, there was a momentum that has come back for the government with what we have seen in terms of Haryana. And remember the headlines then, Narendra Modi is back, the BJP is back, and therefore with that wind in its sails, although that's not really reflected directly on how the markets have behaved, the markets have perhaps reacted more to FIIs and what they have been up to. I think there will be a political signal also that is provided to the markets. Siddharth, firstly, a very warm welcome on Market Today. We hope that you make this a regular presence. Sakshi and I often fall short of discussing macro, and we take it as an excuse to discuss only stocks, but so good to have you. But yes, so you know, everybody now knows that it's been a wonderful market for the last 4 years, and whatever you bought, either it rose or it rose very smartly. And we are now at a time when all valuations have shot through the roof, and the smarter guys have realized it before the rest of us, and they've booked out about 1 lakh crores and taken that money home. Now comes the next Samvat. I believe the underlying themes remain the same. All of us are used to corrections in our life, Siddharth and Sakshi, but the thing is that this one has been a bit sharper to everybody's liking. As Sakshi and I were discussing yesterday, for the last 4 months before October, which is September, August, June and July, each month the index rose. At that point of time, FIs were investing equally as they are withdrawing now. So nobody complained then. I believe we have little to complain as far as foreign
institutional net selling is concerned, but I take it that from now on market will be a stock pickers paradise. You will not see the kind of headline indices gaining 35%, 60%, 70% also in 1 year Samvat. So the understanding is that we'll have a nice how should I say a flat kind of a move till valuations get into sense, maybe a time correction on the Nifty and on many other indices, but of course good times will continue to roll, and sensible people who invest in the longer term buy quality, and buy quality when it is in pain will always be making supernormal money, and they are all welcome on Business Today television. We discuss this and this only. Sakshi. Right. Siddharth, one more thing as well that I wanted to discuss before we get on to the hardcore markets and the cues right there is as well. The average retail investor participated and how? You know, rarely have we seen, and both you and Shell have seen market cycles and economies much more than I have. You know, there was a time in history when the FIIs used to pull out and the markets would crash like anything. This is the only month where we have seen when the FIIs have sold, the DIs have still been pumping in money, but the markets are down. But all through this year, as and when the FIIs sold off, the retail investors continued to pump in money. 20 crore client accounts is what NSE has now talked about as well. Do you think that the confidence of the Indian retail investor can continue in the Indian economy and the markets, despite the challenges that may come in on the macro setup that you've highlighted in the well, first you point? know, before I answer that question, I just want to reflect on what Shell said. I was reading Shell this commentary that 3 out of 4 investors in the current cycle of the markets have never seen a bear market. So, and I add that to the question that you have in mind, because Sakshi, I think that's what you are really driving at. Right. I believe a structural break or a pivotal moment, choose whatever way you want to describe it and phrase it, has happened in the markets. And we've used this term, and I use this again with some sense of caution, but I'll stand by it, the phenomenon of the Atmanirbhar market. Shell and I have tracked various sectors of industry pretty much since the mid-90s, and one of the sectors that Shell and I have tracked is telecom, where from a significant foreign presence, both from a technology and capital perspective, our telecom industry is now Atmanirbhar. Look at cement, for example. Look at the aviation sector, although there were restrictions around FDI, and you can do this sector by sector. I broadly believe that Atmanirbharta in the market is here to stay on account of a change in investing culture, on account of proliferation of digital technologies, digital KYC, the ease of doing business, Gen Z and the younger generation's approach toward investing, the contrast and comparison between the fixed deposit era of our parents and I would say to some extent our generation and the younger generation, all of that is coming together. So if FIIs continue to behave the way they do, which I also believe is not something that will be permanent, I think it will be their loss, because the opportunity to perform or be part of the India growth story will not be available forever. At some point, getting in will be far more expensive than it is even today. Sakshi. Absolutely. So 2 minutes to go before we see the pre-open trade on Muhurat Trading, the first day of Samvat 2081, with the hope that what we have seen until thus far continues and even betters for itself. But remember, viewers, we have this recency bias that we always fall prey to. Last 25 sessions odd have been not very good for the Indian equities or the bulls as well. But if we look at the whole of Samvat 2080, I will give you the kind of data that I collected. It has actually been a record-breaking year for the Indian markets. Why? Because investors have generated 128 lakh crores in investors' wealth has been added in this year. This has marked Samvat 2080 as the most wealth-generating year in India's stock market history. So don't forget that if you have seen this 25 days of about 6, 8%, 10% kind of a correction. $1.5 trillion has been added to investors' kitty.
and the entire market cap has gone beyond 453 lakh crore rupees as well. Sensex has given a return of 23%. The Nifty has gone up about 25% as well. What we've also seen is that gold has given a 32% gain, and silver has even given higher returns of 39%. So not just markets, but even gold and silver have continued to create a lot of wealth for investors out there. I think, Shell, the big question will be for Samvat 2081, will it be equities, will it be gold, will it be silver, or maybe Bitcoin, which has actually given about 70% returns in Samvat 2018? What will continue to be the biggest wealth creator for investors? Shell. Sakshi, I think quality stock picking. As I was saying, horses raced and donkeys raced too. And in many, many instances, donkeys overtook horses in 2024. Possibly, we will now focus back on quality. We will focus back on large caps, and we will look at how markets have come up. It's a nice blast. I hope I could shut this market now, collect 345 points, and all of us could start partying for Diwali. But Siddharth won't let us do it. Nevertheless, 24,523, ladies and gentlemen. What a beautiful deep shade of green that you have on the Lal Street on Muhurat session. And all of them are in the green, Sakshi. Let me start with the best one. Tata Motors 2.5% higher on the Nifty, 854. Axis is 2.5% higher. Infosys is added 35 rupees. Bajaj Finance up 109. You have a very strong move coming into Reliance, 13 rupees higher. And of course, you have strong moves coming into Hindustan Unilever and ITC, 11.75 and of course 2.65. That is how the main 10 index heavyweights have performed. A very quick look into what is gaining ground. Cummins India, keep an eye out on this one. It had been beaten black and blue, 1.2% higher. You have strong gains coming into Voltas. This is the rally post the earnings. These are the names that look good. NetWeb Technologies. Let's look at the top gainers in the volume space. It's Trent 1% higher and Angel One 1.2% higher. What we'll do is we'll get back to our discussion, but remember, circuit limits will be a lot shorter today, and of course we have just 1 hour of price action, and we are headed into the weekend. This is how it is for the moment. Punita Kumar Sinha, managing partner at Pacific Paradigm Investors, joins us. Namaste Punita ji. Namaste. A very, very warm welcome to you. Happy Diwali. And Diwali all your to foreign all the friends viewers are and sort of also- bidding us goodbye. All your foreign friends are bidding us goodbye in the Diwali month. What are they going to do with so much of money? Well, you know, treasuries are yielding 4.5% roughly. And if you can buy 20-year treasuries and get 4.5 or 4.2 even in US dollars, that's not such a bad long-term asset class. So some of them are definitely allocating to money market treasuries, getting a little conservative heading into the US elections. And then there are many other countries and markets where valuations are a lot more attractive than India. So I think that also is playing a role in the asset allocation. A warm welcome to you, Punita ma'am, and thank you so much for joining in, and happy Diwali to you. Well, tell us, what is your gut feel like after 2 consecutive years of above 20% returns? Do you think it will be a hat trick for the Nifty, or we have to keep our expectations really low this time around in the new Samvat? Well, I would not keep expectations really low, but I would keep expectations low, but not really low. Because I think it's good to be prudent, to be conservative now, given where valuations are. And given that India's had a very strong bull market. You mentioned historically India has not done so well, but there have been many years in the 90s where Indian markets have performed really well. I remember my fund was up at 1 year and 160%. So there have been, stronger bull markets in the past. 2007 was a very strong year.
But every time there's been a very, very strong year, we've seen some corrections going into the next season. So one should be prepared for some volatility, correction, sideways markets for some time. U.S. election is a very important event, and geopolitics are very important. Everybody is ignoring what's happening in the Middle East. The markets, in particular, are ignoring, but all the people who've seen wars and are older generation, they think it's the worst that they've seen in a long, long time. And so we need to be mindful of what is going on globally, which I don't think in India people are. They're just so focused on the momentum here. So I think that is something you need to keep in mind. The other thing is that earnings momentum in our models are slowing down, is reducing. The momentum is definitely reduced. There are the earnings diffusion, which is the upgrades versus the downgrades, that also we are seeing slowing down. So the earnings are not keeping pace with the markets and with the enthusiasm and the exuberance. And that's sort of not just India, it's also a bit of a global phenomena, particularly US and India. China's kind of on its own trajectory where they're giving stimulus. So they're kind of uncorrelated at the moment with what's happening in some of the other markets. But all of those are factors that lead you to want to be, I think, a little more conservative. Mr. Devan Choksi, MD at DR Choksi FinServ Private Limited, joins us. Namaste, Devan Bhai. Festive greetings and the best wishes that business today can offer to you. Everybody at home and in the office on Diwali are on your way. Just seeing the price action on Nifty at the start of the new Samvat, do you think all that could go wrong is behind us, and maybe we start Samvat 2081 on a strong footing, or is more pain ahead? Shahil, wish you happy Diwali, and in advance, I think wishing you happy and prosperous New Year's. Well, I believe the time probably today is to see how market consolidates, because we have had a very good run in this market. Probably most of the companies have had a phenomenal run in the market. They have seen the growth in the profit, but at the same time, their valuations become quite expensive. And I think whenever the valuations go out of reach, whenever they become expensive, generally the action, and thereafter I think is more of a time correction. In this scenario, I believe that overall, I think some amount of time correction is definitely required, so that I think the market becomes healthy. Nothing wrong with the economic fundamentals, nothing wrong with corporate fundamentals. Maybe I think the valuations are required to get a little bit more adjusted. And that's what I think this market is currently doing. So in fact, I am very happy with the process in which I think the market is getting corrected. And more than welcome if some of the expensive stocks, they start giving you some amount of correction. It is, I think, a really good time that investor would have if this correction is taking place. Devin sir, warm welcome and happy Diwali to you. We've been discussing the aspects that will be important for investors to consider in the upcoming Samvat with you. But I wanted to understand one thing. For the average retail investor who may be looking to start afresh in this current trade setup, what would you advise? Should one stick with an index fund? Should one stick with a large cap fund right now in case one is absolutely just beginning, or a few top leaders from various sectors within the large caps and maybe some mid and small cap funds to top it all? How are you really advising that fresh investor to begin Samvat 2081 with? Yes, Sakshi, happy Diwali to you as well. Well, I believe that I think for retail investor, I think a regular investing habit is most important. They must not come into the market, I think, only to just chase the valuation of the stocks. They should be regularly investing into the market. That is that is a prudent way of, I think, investing, as we have all experienced all these many years. In my understanding, I think today market is giving you a good amount of opportunity. Some of the good quality stocks have also corrected, and the valuation wise also, I think they're becoming a little bit more attractive. Particularly, I see, I think, a good clarity in the large cap stocks, where the valuations are now becoming more attractive. And that's where probably if you are a retail investor and if you are investing through mutual fund,
then maybe I think one should select the right kind of a scheme to invest into the fund and then regularly invest in it. And if you are directly investing into the market, probably I think the correction in the valuations in the large cap, they are really becoming, I think, more attractive opportunity. Maybe individual companies within respective sectors, they need to be looked at. And that's where probably I think one will have to pick some good quality stocks and invest it over a period of time. I think you should remain invested over a period of time. Okay, let's throw the same question to Punita. Ma'am, in your own portfolio at Paradigm Advisors, what have you been up to over the last 2 odd months or so? And if you've raised cash, when would be a good time to deploy? So we've definitely raised cash. Our equity exposure, we are also involved in a multi-asset fund, and we think that multi-asset is a good asset, fund kind asset that people should take exposure to instead of just equity mutual funds. So there we have been raising our cash, reducing our equity exposure. We've also been seeing good opportunities in shorting. We've definitely gravitating, our models are more gravitating us towards more large caps, where the earnings momentum is a little better compared to small and mid caps, and the valuations are better. So as far as an India-centric strategy is concerned, that's what we are doing at the moment and over the last couple of months. And even amongst the large caps, it's a bit more defensive names. Punita ma'am, you left off the last answer at the major event that will be US election results, and that will be very important to watch out for. I think you're the best place to help our viewers really understand what will be better for Indian markets. What is your own sense between Trump and Harris, who's going to be probably the next US president, and who will be better for Indian economy and the market? Well, you know what the election poll track record is, even in India. So I wouldn't hazard a guess as to who's going to win. It's a very tight race, and I think there is definitely, in my view, going to be a period. No matter who wins, there is going to be strong, anti whoever forms the government, because it is a close race. And so whoever wins, the other side is going to be quite unhappy, and we're going to see a lot of noise. Policy making in the US isn't going to be easy because it's going to be quite a divided Senate and Congress. And so getting policies implemented is going to be quite hard. So I think there will be a lot of noise regardless of who wins. And that is sort of why we are seeing a little bit of the correction globally, is because the markets were exuberant, and it's but natural to kind of wait and watch. It's just less than 2-3 weeks away where we're going to get the results. And as far as who's better for India, well, the consensus view is that the Republican administration, if President Trump were to form the government, would have a more friendly approach to India versus the Democrats. Now, this is the view that I hear from the government here. And I guess they've experienced policy making both under the Trump administration and under the Biden administration. And they feel that the Trump administration was a little bit more friendly towards India. So let's see what this means. So election results would have some modest impact on what it means for India. It will have a bigger impact as to what it means for Indian equity markets, because Indian equity markets, all said and done, are correlated. The flows and the fund flows are correlated globally. And if the US markets don't like the outcome and the US markets correct, some of that in the immediate future would also have an impact on the Indian markets. And also then the China stimulus also is having some impact on flows, and some of the other Asian markets as a result are also getting some more attention, and other emerging markets also getting attention because the valuations there are, obviously at lows compared to the gap between India and some of these other market valuations is quite high. Yeah, some of the market valuations is quite high. Right. With that,
we'll wait for the opening ticks to come in. But Punita and Devin Bhai, thank you so much for being with us on this wonderful start to Samvat 2081. Of course, we look forward to your presence over the next 12 months to guide all our viewers and investors on how to invest into markets in a more profitable manner. Have a nice evening and of course a happy new year. Thank you and happy Diwali. This, ladies and gentlemen, is the ringing of the bell at the National Stock Exchange. The markets have opened 100 points higher on the Nifty, 180 points higher on the Nifty Bank, 100 points higher on Nifty IT, and about 150 points higher on the NSE 500. Let's hope, Sakshi, that this new year rings in a lot of green, as is evident on the screen, because we've sort of lost a lot of momentum. And of course, as you point out, about 150 lakh crores as far as market capitalization is concerned. But we welcome perhaps one of the best stock pickers in the market, Mr. Vijay Kedia, Managing Director at Kedia Securities. नमस्ते विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और नमस्कार। नमस्कार। नए संवत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके तो नाम में ही जीत है। अब बताइए सन 2081 में क्या दाव खेलना है कि विजय मिले? तो बस इसमें यही है कि दाव नहीं खेलने का मतलब ये समझिए, वो खाली अगर हम अपना चेंज कर दें कि शेयर बाजार को अगर दाव का जैसे जरिया न अगर बनाए तो बाकी सब कुछ एकदम सही है। खाली इसको इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म समझे तो सब चीजें जो है वो अच्छी हो जाएगी। क्या बात, बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की विजय जी आपको, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। देखिए, जो अक्टूबर का महीना रहा है उसमें हमने आपके गाने को बहुत मिस किया, और ये उम्मीद करते हैं कि संवत 2081 की शुरुआत आप अपने गाने के साथ बिजनेस टुडे टेलीविजन पर करें, जिससे कि बुल्स की भी वापसी हो और नए रिकॉर्ड हाईस बने, और दिन रात चौगनी हमें एक तेजी दिखे स्टॉक मार्केट्स में, सबके पोर्टफोलियोज में मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दिखे, जो कि आपके पोर्टफोलियो को तो चमकाते ही रहेंगे, लेकिन हमारे सभी दर्शकों के पोर्टफोलियो को उस तरीके से जीत दिलवाएं जैसे कि विजय केडिया के पोर्टफोलियो को मिलती है। बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? पहली दो लाइनें आपकी संवत 2081 के लिए। तो देखिए, यहाँ पर खाली ब्रह्म वाक्य या समझिए जो भी गीता ज्ञान जो खाली वो एक ही है कि वो सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, रूमर पे टिप पे न टाइम वेस्ट कर, नॉलेज और पेशेंस का बिजनेस है ये, अनुभव से सीख और बेस्ट कर। इसको बिजनेस समझे, रूमर टिप पे न जाएं, समझने की चेष्टा करें और लंबी अवधि के लिए निवेश करें। ये पूरा गीता ज्ञान सिर्फ सिंपल सा यहाँ पे है मैम, और लेकिन सिंपल किसी को करने का नहीं है, बात ये काम। बिल्कुल, आपने सही फरमाया केडिया साहब। कोई ऐसी दवाई या गोली इजाद कीजिए जो आदमी खाए और बस ऐसे इन्वेस्ट करे जैसे कि आपने बताया कि भाई लंबी अवधि के लिए करो, दाव मत खेलो, अच्छी चीज़ें खरीदो और आराम से गाना गाओ और बढ़िया खाना खाओ। ये कोई आपको कहीं किसी एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो एक ऐसी गोली बनाएगा और बस फिर हम सब आपके साथ गाने वाने पहुंचा करेंगे फिर रोज। तो ऐसा ना सर, ये गोली भी समझिए, नॉलेज भी सबसे बड़ी गोली है। नॉलेज के थ्रू वो गोली भी इन्वेंट की जाती है। तो लोग खाली अगर खुद को अगर अपना खुद का परीक्षण कर लेना कि भाई मैंने 2 साल में 3 साल में क्या किया और मैंने क्या गलती की और मेरे को क्या सूट किया और मेरे को क्या सूट नहीं किया, किसके कारण मेरे को पैसे लगे, किसके कारण मेरे को पैसे आए, और थोड़ा सा बाजार में नजरिया खाली अगर उसी ज्ञान के हिसाब से और लोगों का थोड़ा पैटर्न देखे ना कि जो बाजार में छोटे मोटे बड़े जो भी सक्सेस हुए हैं उन्होंने क्या ऐसा काम किया जो मैं नहीं कर रहा हूँ, इतना सा निरीक्षण अगर आप कर लेना सर तो ये आपके लिए सबसे बड़ी गोली हो सकती है। लेकिन क्या इतना भी होमवर्क कोई करना नहीं चाहता है सर। सब अपने आप को, ज्यादातर लोग, सब तो नहीं लेकिन ज्यादातर लोग जो नए आ जाते हैं वो अपने आप को 30 मार्का समझते हैं कि जो लोगों ने नहीं किया वो मैं कर लूंगा। ये प्रोसेस है सर, प्लांट के जैसे हम बीज बोते हैं, फिर उसके अंदर में प्लांट निकलता है, फिर वो पौधा होता है, फिर वो पेड़ होता है, फिर वो पत्तियां देता है, फिर वो फ्रूट्स देता है, फिर वो छांव देता है। इतना तो सर पेशेंस ही नहीं यहाँ पे।
इतना सा अगर कोई आदमी खाली चेंज कर लेना अपने एटीट्यूड को सर, तो ये गोली के जैसा ही होएगा सर। जी बिल्कुल। विजय जी, अब ये बताइए, जो सभी हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं इस मुहूर्त ट्रेडिंग में आज के दिन आप क्या खरीदने वाले हैं, जो कि अगली दिवाली में जब हम आपसे बात करेंगे वो ऑलरेडी एक मल्टी बैगर बन चुका होगा। तो देखिए, आज तो मेरे ध्यान में ऐसा कोई मेरे माइंड पे रडार पे अभी तक जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तब तक मेरे दिमाग में मार्केट खुला है, मेरे दिमाग में ऐसा कोई शेयर्स नहीं है जो मैं लूंगा। और मेरे को कोई ऐसा ज्यादा वो रहता भी नहीं है कि आज दिवाली के दिन है तो मेरे को ऐसा कुछ लेना है, क्योंकि अच्छा। मार्केट में तो हाँ रोज ही दिवाली मनाई जाती है और 3 साल से तो हम रोज दिवाली मना रहे हैं मार्केट के बिल्कुल। अंदर में देखा जाए तो इस बोलकर ऐसा मेरा वो नहीं रहता है कि आज मैं कोई शेयर्स लूंगा। तो अभी तक मेरे को नहीं लगता है कि कोई मैं शेयर्स लूंगा। तो संवत 2081 में क्या खरीदने वाले हैं, इसका आइडिया दे दीजिए। नहीं, मैं तो क्या है ना जी मैम, जो मेरे पुराने जो शेयर्स लिए हुए हैं उनमें थोड़ा बहुत बदलाव बदलाव किया है, उसके अलावा मेरे वो शेयर्स टिके हुए पड़े हैं, जो भी ज्यादातर एक दो शेयर्स मैंने इधर उधर कुछ किए हैं, उसके अलावा टिके हैं। तो मैडम क्या होता है ना कि रोज रोज कोई एक्टिविटी करना जरूरी नहीं है, इनएक्टिविटी इज ऑल्सो एन एक्टिविटी। तो ज्यादा काम करके अपने को कौन सा, अपने को कोई इंसेंटिव मिल रहा है या कोई अपना गिनेस बुक में नाम आना है और आ भी जाए तो उसका क्या महत्व है। तो इस बोलकर डिसिप्लिन रखने का है, काम माइंड रखने का, ऐसे बाजार के अंदर में आप अपने शेयर होल्ड कर लो जहां पर शेयर्स गिर रहे हैं ऐसा जो अभी हुआ लास्ट वीक के अंदर में, यही बहुत बड़ी बात है ना मैम। तो इस बोलकर मैं तो जो पुराने हैं अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब तक मेरा यही है कि जो पुराने हैं उनको मैं होल्ड करके रखूंगा मैं। जी। और केडिया साहब का नूरानी चेहरा देखकर बिजनेस टुडे में आप देखिए तेजस नेटवर्क्स का शेयर, जहां पर केडिया साहब की बहुत बड़ी पोजीशन है, आपको बहुत अच्छे हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। विजय जी, ये जो पिछले महीना खासकर और उससे पहले जो 2-1 महीने बीते हैं, क्या आपने अपनी कोई पोजीशन ट्रिम करी हैं या जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं उनमें कुछ इजाफा किया है? कोई इजाफा तो मेरे को ध्यान नहीं है कुछ किया है कि नहीं, कुछ ट्रिम जरूर किया है मैंने, कुछ एक शेयर्स मैंने बेचे हैं उसमें एग्जिट लिया है मैंने, कुछ शेयर्स में और कुछ में बढ़ाया होगा, मामूली कोई काम किया है छोटा मोटा, तो वो जरूर मैंने किया है। हाँ थोड़ा सा रद्दोबदल किया है थोड़ा सा। ओके। विजय जी, अब ये बताइए कि अगर जैसे हमने देखा है हर मार्केट साइकिल में कोई ना कोई सेक्टर एक लीडर बन जाता है, कहीं ना कहीं मनी शिफ्ट होता रहता है। साल 2024 भी या संवत 2080 जो निकला है, इसमें भी हमने शुरुआत के कई 6-7 महीने अक्सर ये देखा कि अलग अलग सेक्टर्स में पैसा जाता रहा और लोगों ने पैसा बनाया। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ हमारे सभी दर्शकों की वजह से कि संवत 2081 में ऐसी क्या 2 और 3 थीम्स हैं या सेक्टर्स हैं जो कि आउट परफॉर्म कर सकती हैं, इवन इफ अगर बेंचमार्क इंडिसेस में थोड़ा वॉलेटिलिटी रहा, जिस तरीके से सबकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि इतने ज़बरदस्त रैली के बाद हो सकता है हम बहुत ज़्यादा इसी तरीके का मूव ना देखें, तो तब अगर अल्फा क्रिएट करना हो तो कौन सी सेक्टर्स में जाए? देखिए अभी क्या हो कि जैसा मेरे को लग रहा है जिस तरह से इंडिया का अगले 10 साल जो विकास होने वाला है जो अमृतकाल जी। में और जो सिचुएशन चल रही है, इसमें आगे पीछे सभी सेक्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे, कोई थोड़ा ज्यादा कोई थोड़ा कम। और आज मैं जो भी बोल सकता हूँ हो सकता है उसका वो कल उसका मीनिंग चेंज हो जाए, या 1 महीने बाद या 6 महीने बाद उसका कुछ मीनिंग चेंज हो जाए, ये मालूम नहीं है मेरे को। तो मेरे को एक फॉर्मूला जैसे मैंने अपने लिए जैसे लिखा है, जैसे शिफ्ट, हम एक वर्ड है अंग्रेजी में शिफ्ट, तो उस पर मैंने एक ये तैयार किया कि मेरे ख्याल से शिफ्ट के अंदर में जो भी शेयर्स जो सेक्टर्स आते हैं वो अच्छे करेंगे। उसमें जैसे एस का जैसे शिफ्ट का एस है, स्टैंड्स फॉर, जैसे फॉर एग्जांपल सिप, तो सिप या समझिए स्टॉक मार्केट समझिए या शेयर्स समझिए। तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, इस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं या एक्सचेंजेस है या डिपॉजिटरी है जो भी लिस्टेड है, ये अच्छा करना चाहिए। और एच से मेरा मतलब है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अच्छा करना चाहिए, हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटैलिटी ये अच्छा करना चाहिए। और उसमें उसमें आ गया एस एच। और आई एफ जो आता है वो इंफ्रा के लिए, कि इंफ्रा के जो शेयर्स हैं वो अच्छे करने चाहिए। और दूसरा लास्ट में आता है टी, तो उसमें मैंने डबल टी जोड़ा है। एक तो आया उसमें टूरिज्म, कि गवर्नमेंट का जो फोकस है कि डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने का है, एयरपोर्ट इतने ज्यादा खुल रहे हैं, तो टूरिज्म और टूरिज्म से रिलेटेड जो शेयर्स हैं टूरिज्म को जो कॉम्प्लीमेंट्री करते हैं टूरिज्म। और लास्ट की डबल टी जोड़ा तो वो टेलीकॉम इक्विपमेंट वगैरह। तो
तो ये मेरे को थीम लगती है कि इसमें मेरा थोड़ा बहुत फोकस है इनके अंदर में, ये अच्छे करने चाहिए, लेकिन इसके अलावा और भी शेयर्स और भी सेक्टर अच्छे करें। केडिया साहब, ये बताइए कि ये जो हमने एक ज़बरदस्त मोमेंटम देखा है बाज़ार में गिरावट की तरफ, आपके क्या कहना चाहिए, आपके तजुर्बे के अनुसार क्या सबसे बुरा समय निकल गया, या आपको लगता है कि सन 2081 का जो संवत आज शुरू हो रहा है, यहाँ पर हम लोग एक फ्लैट मार्केट में सिर्फ स्टॉक पिकर्स को आगे निकलते हुए देखेंगे? मेरे को ऐसे पर्सनली लगता है, और मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, और मैं गलत भी होऊंगा तो भी मेरे को फायदा ही है इस बात के अंदर में। मेरे को लगता है कि जो गिरावट का जो टाइम है वो शायद खत्म नहीं हुआ है, ऐसा मेरे को लगता है। ये अभी थोड़े दिन और प्रोलॉन्ग करना चाहिए, और कई शेयर्स ऐसे जो हैं जो अभी ऊपर से 30-40% तक करेक्ट हुए हैं, और कुछ शेयर्स और भी करेक्ट होंगे। तो ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है, और शायद 2-4 महीना और कुछ शायद ऐसा लगे ये मार्केट को पूरा शेकअप होने में, कंसोलिडेट होने में या शेकआउट होने में। ऐसा मेरा सोचना है। और लेकिन मैं मोर और लेस फुली इन्वेस्टेड हूँ इसके अंदर, मोर और लेस फुली इन्वेस्टेड, क्योंकि कुछ शेयर्स अगर मैंने कुछ बेचे भी हैं तो मैंने कोई दूसरे कुछ में मैंने ले लिए है मैंने। तो ऐसा मेरे को लगता है। और अगर नहीं हो तो तब भी मेरे को बोले ना, दुहू हाथ मत मोदक मेरे, दोनों हाथ में लड्डू है, हो तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अच्छा, ये बताइए विजय जी कि क्या आपने ये भी आइडेंटिफाई किया है कि संवत 2081 में ऐसा कोई पॉकेट है जिसे आप बिल्कुल नहीं देखने वाले हैं, पूरी तरीके से अवॉइड कैटेगरी में डाल देंगे, या फिर आप निवेशकों को कॉशन करना चाहते हैं कि भाई या तो यहाँ पर वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है, या फिर ये सेक्टर बहुत चल चुका है, या फिर अभी कोई ट्रिगर नहीं है? कोई ऐसी कोई पॉकेट है जहाँ पर आप बोलेंगे कि नहीं, अभी यहाँ पर नहीं जाने का वक्त है? नहीं, मेरे को अगेन इसका मेरे को पक्का नहीं मालूम है, लेकिन मैं मेरे लिए जो सोच रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। मेरे लिए जैसे मैं आईटी सेक्टर को अवॉइड करता हूँ, मैंने 1-2 साल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आगे भी नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं एआई के कारण। तो कौन सी कंपनी को फायदा होगा, किसको नहीं होगा, इसका मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर सकता, मेरे को इसकी समझ नहीं है। तो मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको मैं फॉर द टाइमिंग मैं इसको अवॉइड करूंगा सेक्टर को, मेरे लिए पर्सनली मेरे लिए। ओके, गॉट इट। अच्छा, ये बताइए कि जो लार्ज कैप्स वर्सेस मिड कैप्स का एक जो हम लोगों ने अभी तक का कॉम्बिनेशन देखा है इन्वेस्टर्स के लिए, क्या इसमें कुछ चेंजेस आएंगे? ऑलरेडी मिड कैप्स जो हैं करेक्शन जोन में आ चुके हैं, 10% करेक्ट हो गए हैं, और ज़्यादा करेक्शन यहाँ बाकी है क्या? क्या लार्ज कैप्स में ही फोकस करना बेहतर रणनीति रहेगी संवत 2081 में? नहीं, देखिए, मैं तो फंड मैं किसी का मैनेज करता नहीं हूँ, कंसल्टेंसी भी करता नहीं हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, और मैं मिड कैप में ज्यादा काम करता हूँ, मैं स्मॉल कैप और मिड कैप में। तो मेरा कोई पॉलिसी चेंज नहीं है, मेरे को कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि मैं इनको बेचकर लार्ज कैप ले लूंगा या लार्ज कैप लेकर मिड कैप ले लूंगा, मैं ऐसा नहीं काम नहीं करता हूँ। तो मैं तो इसी पे स्टिक रहूंगा, मिड कैप पे। घटेंगे तो और भी घट जाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है इसके अंदर में, तो मैं उसी पे फोकस करूंगा। जी, केडिया साहब, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। इस सबसे अच्छे दिन साल के आप हमारे साथ जुड़े, और बहुत ही सटीक राय आपने हमारे व्यूअर्स को दी। जाते जाते 2 पंक्तियां हो जाएं तरन्नुम में। तो वो जो पहले मैंने सुनाया भाई, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, रूमर पे टिकते न टाइम वेस्ट कर, नॉलेज और पेशेंस का बिजनेस है ये, अनुभव से सीख और बेस्ट कर। थैंक यू, क्या बात। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच विजय सर, आई विश यू वेरी हैप्पी सन आपका पिछले आगे आने वाले सालों से और बेहतरीन तरीके से बीते, और नव वर्ष की और दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, नमस्ते नमस्ते। As good a time as any to welcome more guests to get wisdom from the market over decades. Mr. Sudeep Bandyopadhyay, Group Chairman at IndiTrade Capitals, joins us, and from the world of managing money, we have Mr. Sanjay Sinha, founder of Citrus Advisors. Greetings and good evening to both gentlemen. Happy Diwali to both of you, and let's hope
that the markets have put the worst behind them. Sudeep ji, first to you, is the worst behind us, or do you see more pain ahead? शैल जी, साक्षी, आप लोगों को नए संवत का शुभकामनाएं। आपके सारे दर्शकों को मेरी तरफ से संवत 2081 की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, ये अभी बताना बहुत मुश्किल है। यूएस इलेक्शन सामने है, और यूएस इलेक्शन एक ऐसा इवेंट है जो डेफिनेटली हम लोग मानना चाहे या ना मानना चाहे, निवेशक के मन में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि एक हफ्ता 15 दिन और रुक जाते हैं, उसके बाद कंक्लूसिवली हम बता पाएंगे कि whether we have seen the bottom or not। हाँ, ये बात सही है कि इंडिया के लिए कॉर्पोरेट रिजल्ट्स जो आ रहे हैं उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि फंडामेंटली ऐसा कुछ खास चेंज नहीं हुआ जिससे कि इंडिया अनअट्रैक्टिव हो जाए निवेशकों के लिए। एक्सेप्ट कॉर्पोरेट रिजल्ट पे ध्यान रहना चाहिए। और जो पैसा एफआईआईज बेच रहे हैं उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो चाइना में कुछ पैसा जा रहा है, मुझे तो लगता है ज्यादातर पैसा यूएस में ही जा रहा है, क्योंकि यूएस मार्केट ऑल्सो अट्रैक्टिव है कुछ एंगल से अगर आप देखेंगे तो इस माहौल में मैं यही कहना चाहूंगा कि निवेशित रहिए, हड़बड़ा के एग्जिट लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपको खरीदना है तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए, एक साथ अपना पूरा जो पूंजी है वो मार्केट में मत लगाइए। शायद थोड़ा बहुत करेक्शन और भी देखने को मिल सकता है। Okay, let's also get in Mr. Sanjay Sinha into the conversation. Warm welcome to you. Happy Diwali, sir. Tell us what is your gut feel like as we begin Samvat 2081. We've had stupendous past. I mean, the record-breaking year in terms of wealth creation, barring this October fall that we have seen. So, do you think this onward momentum could be continuing in the new Samvat as well? Will equities be a great asset class to invest in continuously? So first and foremost, happy Diwali to you, Shailji, and also to Sudeep and your viewers. I agree with you 100% that, Samvat 2080 was a wealth creating year. But, for every wealth to be created, there has to be some retracement of the market. Otherwise, if we keep going on from one peak to the other without any correction, then you do not have the opportunity of a sector rotation. You do not even have the opportunity of a class rotation in terms of large cap, mid cap, and small cap. I believe, and that is my feeling, that while we have seen a good bout of rally in the markets, this interim period that has passed over the last, I would say, 2-3 months post the elections and the budget, have been, a period which has seen two different markets. In fact, if you look at the Nifty, the correction of about 6% in the Nifty is actually hiding the fact that almost 80% of the stocks have corrected by more than 10%, and out of this 80%, a substantial number of stocks have actually corrected by more than 25%. My feeling is that this is more an India-specific correction triggered more by the local participants and not necessarily by the FII outflows that we have seen. Because if that was to be the overwhelming or the factor which was weighing on the market, then we would have seen the index heavyweights or the sectoral indices which are heavy on the index, such as banking and others, to have corrected more. That has not happened. I think this has been more a mid cap correction, a more thematic correction where we have seen power, railways, and defense correct more. And I feel that maybe this is preparing the ground for a pre-budget rally which will unfold maybe from December or January when we start building up expectations towards the budget. And of course, I will conclude by saying that the acid test of any market in the medium term or the long term is valuation. So if the earnings momentum is not going to keep pace, then I would be a little guarded in terms of my outlook on the market. But as of now, I continue to remain bullish. नमस्ते संजय जी, और तहे दिल से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आगे आने वाला वर्ष जितने पैसे पिछले अनेक वर्षों में आपने बनाए हैं उनसे कहीं ज़्यादा आगे आने वाले वर्ष में बने। चर्चा करते हैं सेकंड क्वार्टर अर्निंग्स की।
काफ़ी सर वो बस मैं आता हूँ आपसे मिलने, फिर इकट्ठा बैठ के खाएंगे। बिल्कुल। जी, मैं जानने की चेष्टा कर रहा था कि ये जो दूसरी तिमाही के नतीजे आए हैं, यहाँ पर काफ़ी दिल दुखा है। फ्रंटलाइन कंपनीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले जैसे लोग कह रहे हैं कि भारतीय मध्यम वर्गीय सेगमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ दिख रहा है। ये मेरे लिए एक ऐसी अजीब सी बात थी जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि हम कभी सुनेंगे, और अगर सुनेंगे तो ऐसे लोगों से जिनके पूरी ज़िंदगी इस मध्यम वर्गीय सेक्टर ने बनाई है, लीवर और नेस्ले खासकर। आपका अपना क्या अनुमान है? क्या ये वाकई आपको किसी डेटा में होता हुआ दिख रहा है? अभी कल मारुति के चेयरमैन श्री भार्गव ने कहा कि भाई गाड़ियाँ बिकी नहीं रही, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया कि डिस्पोजेबल इनकम कम होती जा रही है, ब्याज के दर इतने ज़्यादा हैं कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे EMIs। आपका अपना क्या व्यक्तिगत रिस्पॉन्स रहा? पहलू हैं जो हमें अपने सामने रखने चाहिए। सबसे पहला तो ये कि जो नैरेटिव बिल्ड हुआ था कि कंजम्पशन में एक अपस्विंग आ गया है, रूरल कंजम्पशन बढ़ गया है, उस नैरेटिव को इस क्वार्टर के रिजल्ट ने नेगेट किया है। इन द सेंस कि अब नैरेटिव बदल गया है कि अगर रूरल कंजम्पशन बढ़ रहा है तो अर्बन कंजम्पशन में थोड़ी ठहराव आ गई है। और ये स्टेटमेंट सिर्फ कंपनी के मैनेजमेंट से नहीं आ रही है, अब ये फाइनेंस मिनिस्ट्री और इकोनॉमिस्ट से भी आ रही है। सो एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू जो है वो ये रहा कि जो पिछला मौसम गुजरा है वो भारत के लिए बहुत सीवियर रहा। मतलब जब गर्मी का फेज था तो गर्मी बहुत ज्यादा थी, और जब बारिश का मौसम था तो बारिश जो है वो जरूरत से ज्यादा। तो ये दोनों जो एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना है, इनका भी कुछ असर पड़ा है कंजम्पशन पे, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तीसरा पहलू जो है वो ये है कि जो अर्बन कंजम्पशन जो कि कोविड के बाद से जिसने हमारी इकोनॉमी को बिल्कुल स्टेबल रखा था, उस पर अब दबाव दिख रहा है। और ये जो दबाव अगर कंटिन्यू करेगा तो ये इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव फैक्टर है, इसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रही यहां से आगे की रूपरेखा और कैसी जर्नी होगी, तो देखिए मुझे लग रहा है कि इन्फ्लेशन की दर जो है वो अब आगे जाकर नीचे आने वाली है। फेड ने तो रेट कट शुरू कर दिया है, तो मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी अब बहुत दूर नहीं है अपने रिजर्व कट साइकिल से की शुरुआत से। तो मैं समझता हूं कि वर्ष 2025 के पहली तिमाही में आरबीआई का एक रेट कट आना चाहिए, जो कि कंजम्पशन के लिए एक पॉजिटिव चीज होगा। दूसरी बात, कंजम्पशन के अगर आप बड़े बड़े टिकट आइटम देखें तो दो मेन सेक्टर्स हैं, एक तो हाउसिंग हो गया और दूसरा ऑटो। हाउसिंग में कहीं भी कोई ठहराव दिख नहीं रहा। रही बात ऑटो की, तो मुझे लगता है जिस तरह के नए लॉन्चेस ऑटो सेक्टर में आने वाले हैं, उससे ये सेक्टर दोबारा फायर अप हो जाना चाहिए। जो मास कंजम्पशन के आर्टिकल्स हैं जो कि एफएमसीजी कंपनीज में है, जो कि आपने कंपनीज के नाम लिए, मुझे लगता है कि रूरल कंजम्पशन इस बार अच्छा होना चाहिए, और अर्बन कंजम्पशन अगर फेस्टिव सीजन के साथ साथ उसमें अगर प्रोग्रेस आ गया और इम्प्रूवमेंट हो गया तो फिर हमें आश्वस्त रहना चाहिए कि आगे जाकर कंजम्पशन से हमें दबाव नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही साथ स्वाति जी ने पूछा था रिजल्ट सीजन के बारे में। तो देखिए, रिजल्ट सीजन के बारे में दो लाइन सिर्फ मैं इतना कह दूंगा कि थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट तो जरूर है इस रिजल्ट सीजन से, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो मीट नहीं हो रहे हैं, नंबर वन, बाय एंड लार्ज। दूसरी बात, अब तक अगर आप देखें क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस, तो ज्यादा बड़ा भार क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के कंपनीज ने उठाया था, जबकि उनकी क्वार्टर ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस दिखती थी करीब 25 से 30% की। अब ये इस तरह का ग्रोथ जो है वो इस क्वार्टर में नहीं दिख रहा। अगर आगे जाकर जो बीएफएसआई कंपनीज हैं उनकी प्रॉफिट ग्रोथ अगर इतनी नहीं रह सकती है, तो हो सकता है कि निफ्टी की जो ईपीएस एस्टिमेट है वो भी डाउनग्रेड हो। तो इसलिए कुछ तो मैं समझता हूं कि नेगेटिव फैक्टर्स भी हैं जो हमें अपने सामने
रखना चाहिए when we are taking a view on the market. Let me get back to Sudeep ji also into the conversation, bring him in. Sudeep ji, help us understand now, within this new Samvat, starting today, where do investors really need to keep their focus? Could you share with us a list of top 2 or 3 sectors where you think outperformance can come in the new Samvat, which should definitely be on the radar of fresh investors? Then apart from this, if you could also detail any key stocks from the list of universe that you have been tracking, which should investors be really keeping on their watch list and start investing, maybe in a staggered way, maybe in a SIP way, starting today in the new Samvat, sir? साक्षी, पहले तो मैं ये कहूंगा कि संजय जी जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल सहमत हूं उससे। एक सिर्फ मैं थोड़ा बात कहना चाहूंगा कि Q2 के नतीजे जरूर दबाव था और अर्बन कंजम्पशन को लेके जो शंका है वो रियल है। सभी कंपनी की तरफ से ऐसा बयान आ रहा है और नंबर्स में भी वो रिफ्लेक्टेड हो रहा है। पर एक मैं उम्मीद हम लोगों का ये है कि Q3 जो कि फेस्टिव सीजन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और फेस्टिव सीजन के कंजम्पशन पे ध्यान जरूर रहेगा। इसके बाद Q4 वहां पे भी ध्यान रहेगा और एक तरह से कंजम्पशन पिकअप की भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है कि ब्याज दरें भी कम होने चाहिए और शायद होंगे भी, जैसे संजय जी कह रहे थे ब्याज दर आने वाले दिनों में आरबीआई ने भी शायद कट करेगा, पर वो ट्रांसमिशन में थोड़ा समय लगता है, पर जरूर उसका एक पॉजिटिव मैसेज मार्केट में जाएगा और सेंटिमेंट इंप्रूव करेगा। तो मैं निराश नहीं हो रहा हूँ। उम्मीद ये है कि Q2 में जो सेटबैक था वो शायद Q3 में उतना बड़ा सेटबैक नहीं रहेगा और थिंग्स विल स्टार्ट इंप्रूविंग। अब अगर सेक्टर स्पेसिफिक जिसका सवाल आपने किया उस पर हम ध्यान दें तो कुछ सेक्टर्स का जिक्र मैं करना चाहूंगा जहां पे हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। पहला सेक्टर BFSI से जुड़ा हुआ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक सदाबहार सेक्टर है और हम सबको मालूम है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत कम है और अगर हम लोग जनरली इस इंडस्ट्री का जनरल इंश्योरेंस सेगमेंट का परफॉर्मेंस देखें वहां पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है पिछले क्वार्टर्स में और पर्टिकुलरली वहां पे मैं जिस कंपनी का जिक्र करना चाहूंगा वो एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा और ओवरऑल सेकंड लार्जेस्ट कंपनी ICICI लोम्बार्ड। यहाँ पे जरूर ध्यान देना चाहिए। परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है, मैनेजमेंट क्वालिटी स्ट्रांग है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क परफेक्टली बैलेंस्ड है, एजेंसी और बैंक इंश्योरेंस के कॉम्बिनेशन के साथ साथ और जो बड़े सेगमेंट्स है मोटर, हेल्थ, बहुत अच्छा कामकाज चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर में लीडिंग है, ओवरऑल भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है इनका और बाकी जो सेगमेंट्स है फायर एटसेट्रा वहां पे भी कामकाज अच्छा कर रहे हैं। तो ICICI लोम्बार्ड में जरूर खरीदारी कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए। हाँ, एक साथ खरीदारी मत कीजिए, जैसे मैं पहले कह रहा था, थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी कीजिए। दूसरा एक कंपनी जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, ओवरऑल कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सेक्टर में हम लोग पॉजिटिव हैं और इस सेक्टर का जो दिग्गज कंपनी है लार्सन टुब्रो, वहां पे मैं बहुत दिनों से निवेशक को सलाह दे रहा हूँ खरीदारी करने का और देखिए नतीजे भी बहुत अच्छे आए हैं। इस मार्केट में जो चारों तरफ दबाव है इसके बावजूद अच्छा नतीजे आए हैं और इसका खास वजह यह है कि लार्सन टुब्रो हैड स्टार्टेड डाइवर्सिफाइंग देयर बुक इन द इंटरनेशनल मार्केट क्वाइट सम टाइम बैक एंड अभी करीबन 50% ऑफ द ऑर्डर इंक्रीमेंटल ऑर्डर्स आर कमिंग फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट। टोटल जो ऑर्डर बुक है उसका 1/3 से भी ज्यादा इंटरनेशनल ऑर्डर है और ये मार्जिन एक्रीटिव है। ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूव हो रहा है कंपनी का। पहले से ही ये अपने जो अनरिलेटेड एसेट से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इंप्रूव कर रहे हैं। सब्सिडियरीज का परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो रहा है और बहुत जबरदस्त ट्रैक्शन तो है ही। सरकार की तरफ से 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऐलान पिछले साल के बजट में किया गया था। इंटरनेशनल मार्केट में हाइड्रोकार्बन कैपेक्स बहुत अच्छा पिकअप किया है। तो ओवरऑल लार्सन में खरीदारी करने की मैं सलाह दूंगा और इसमें मजे की बात यह है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस भी ऐसा कुछ नहीं बढ़ा, जो कि मतलब इनके जो छोटे छोटे कंपनीज हैं उनके शेयर प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, पर लार्सन का प्राइस ऐसा कुछ नहीं बढ़ा। यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है थोड़ा थोड़ा करके फॉर ए लॉन्ग टर्म। तीसरा सेक्टर मैं जिसका जिक्र करूंगा वो थोड़ा हटके सेक्टर है, ये रिसाइकलिंग सेक्टर। और एक देखिए ग्लोबली एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ रहा है और एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस के साथ साथ कदम रखते हुए जो सेक्टर सामने उभर के आ रहा है वो है रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री का दिग्गज कंपनी है इंडिया में ग्रेविटा इंडिया
यहाँ पे प्राइस थोड़ा अप्रिशिएट कर गया है, पर इसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि 82% लेड रिसाइकलिंग एक कंपनी करता है और बाकी जो रिसाइकलिंग है वो बाकी बैलेंस टर्नओवर आता है। और मजे की बात यह है कि यूरोप जो कि एनवायरमेंटली सबसे ज्यादा कॉन्शियस कॉन्टिनेंट है, वहां पे इन्होंने एक बहुत अच्छा कदम लिया है, एक फैसिलिटी एक्वायर किया है जो कि टायर रिसाइकलिंग के लिए। और ग्रेजुअली हम लोग ये मानते हैं कि यूरोपियन मार्केट में, रिसाइकलिंग मार्केट में बहुत अच्छा एक पेनिट्रेशन ग्रेविटा कर पाएगा आने वाले दिनों में। ओवरऑल बाकी जो रिसाइकलिंग अपॉर्चुनिटीज है वहां पे भी कंपनी का ध्यान है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों जगह पे। और परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है। और मैं तो ये मानता हूं कि इस सेक्टर का स्काई इज द लिमिट, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। वैल्यूएशन थोड़ा ऊपर है, पर इसके बावजूद एक पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है इस इंडस्ट्री में। इसीलिए जो थोड़ा एग्रेसिव पोजीशन लेना चाहते हैं उनके लिए मैं ग्रेविटा चुन रहा हूं। वो यहाँ पे खरीदारी करें और निवेशित रहिए लंबे अवधि के लिए। राइट, सुदीप जी बहुत बहुत आभार आपका, और सिन्हा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मुंबई में जल्द मुलाकात होगी और आगे आने वाले 12 महीने, आगे आने वाले कई साल, कई दशक आप दोनों के लिए, आपके कस्टमर्स के लिए बहुत बढ़िया रिटर्न लाएं, यही आज की आशा। बहुत बहुत शुक्रिया। Let's shift focus, ladies and gentlemen, and welcome Manish Sonthalia. He's the director and CIO of MK Investment, one of the finest stock pickers that have graced the Lal Street over the last 2.5 decades. Manish जी नमस्कार, बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे आने वाले वर्ष के लिए अग्रिम कॉन्ग्रेचुलेशन, जहाँ पर आप बढ़िया रिटर्न कमाएंगे। मनीष जी, क्या लगता है, आपके पास तो हमेशा हज़ारों करोड़ों रुपए पड़े रहते हैं कैश में, नए इनफ्लोज में, बताइए इस गिरावट में कहीं लगाने का मौका है या फिर उनको आप लिक्विड फंड में डाले हुए हैं? लिक्विड फंड में तो हम कभी भी इन्वेस्ट नहीं रहते हैं शैलेंद्र जी, ये तो आप जानते हैं। सबसे पहले दिवाली की शुभेच्छा आपके दर्शकों को, आपको संवत 2081 बहुत अच्छा जावे। शुरू करते हैं कि लास्ट एक साल में, पिछले संवत में बहुत अच्छी रिटर्न बनी है। निफ्टी में 25%, मिड कैप में 37%, स्मॉल कैप में 47%। मुझे नहीं लगता कि 2081 में इस तरह की रिटर्न्स बन पाएंगे, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ी सी नम है, क्योंकि 2020 से 2024 बहुत अच्छी फिस्कल डेफिसिट हुई, सरकार ने बहुत स्पेंड की और उसका रेपरकशन हमें कैपिटल मार्केट्स को देखने को मिल रहा है। बट आज की डेट में 2025 के जो बजट में एफआरबीएम एक्ट में थोड़ी सी कटौती हो गई है और उसके कारण फिस्कल स्पेंडिंग जो है कम है। रेट कट भी अभी आता हुआ दिखता नहीं है, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25 में दिखेगा। तो मुझे ये लगता है जो एग्रेसिव स्टांस बाजार में पिछले साल में वर्क किया है, वो इस संवत में मेरे हिसाब से रिटर्न कैपिटल प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत है। जो रिटर्न्स आपने बनाए हैं उनको प्रिजर्व कर लीजिए और इस डायरेक्शन में बेसिकली लार्ज कैप्स में ज्यादा फोकस रहेगा बनिस्पत आपके मिड एंड स्मॉल कैप्स में। डबल डिजिट रिटर्न 10 से 15% का अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी रिटर्न्स मानी जाएगी इस संवत में। निफ्टी की रिटर्न बोल रहा हूँ, और अगर इससे ज्यादा मिलता है तो बोनस होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ 2025 की 7-8% से ज्यादा नहीं होनी दिखती है। थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स अभी आने हैं। सरकार को काफी स्पेंडिंग करनी है, क्योंकि सरकार की स्पेंडिंग थोड़ी सी म्यूटेड दिख रही है। इलेक्शंस बोल लीजिए, पिछली इंटरिम बजट की एलोकेशन स्पेंड नहीं हुई, नई बजट की जो ऐलान हुई है उसकी स्पेंडिंग हमें Q3 और Q4 में देखने को मिलेगी। और 2026 में भी 12 से 15% की अर्निंग्स ग्रोथ है। अगर सैक्रोसैंक्टनेस ऑफ मार्केट कैप टू जीडीपी बरकरार रहती है, जो कि 150% तक चली गई है, तो या तो जीडीपी शॉर्ट टर्म में बढ़े या मार्केट कैप नीचे आए। तो जीडीपी तो शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा बढ़ नहीं सकता है और मार्केट कैप थोड़ा सा कम जरूर हो सकता है, और ग्रोथ रेट जो है 6.5-7% आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। इन सब को देखते हुए डिफेंसिव स्टांस रखना चाहिए मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में। जो सस्ते सेक्टर्स हैं उनमें, जो लार्ज कैप के स्टॉक्स हैं उनमें ज्यादा आउट परफॉर्मेंस की गुंजाइश। हम सब कुछ यहाँ पर रिलेटिव बात कर रहे हैं। बैंक्स जो कि नंबर्स ठीक ठाक डिलीवर कर रहे हैं पर वैल्यूएशन में प्रॉब्लम है।
दूसरी आपकी आईटी, जो कि एक अप साइकिल में शुरू होने को जा रही है रेट कट के बाद, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद। जो डिस्क्रेशनरी स्पेंड है ओवरसीज यूएस, वो थोड़ी सी पिकअप होती हुई दिख रही है। फार्मास्यूटिकल्स, बायोसिक्योर एक्ट पास हो जाएगा, इंडिया की वैल्यू चेन, पूरी फार्मा वैल्यू चेन, जेनेरिक्स बोल लीजिए, बायोलॉजिक्स बोल लीजिए, सीडीएमओ, यहाँ पर एक तेजी देखने को मिलनी चाहिए, जो कि अभी बेसिकली चाइना से जो बिजनेस है इंडिया को आएगा। और चौथी जो इस क्वार्टर में जो रेवलेशन हमने देखी है वो है कैपिटल मार्केट एंटिटीज। जो मैसिव आपकी प्रॉफिट ग्रोथ सब कैपिटल मार्केट एंटिटीज में देखने को मिलती है। या आप ऑनलाइन ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स ले लीजिए, या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ले लीजिए, रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट्स ले लीजिए, वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स ले लीजिए, तो साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी मिड टू लॉन्ग टर्म यहाँ पर बहुत जबरदस्त होगा। और इस तरह की कोई वैल्यूएशन री रेटिंग इस सेक्टर में अभी हुई नहीं है, जो आने वाले 2 4 5 सालों में जो प्रॉफिट ग्रोथ होनी चाहिए। चूंकि फाइनेंशियल सेक्टर रियल सेक्टर को लीड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से बैंक्स एंड कैपिटल मार्केट रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ सेविंग्स की थीम है, आईटी, फार्मा, ये 4 सेक्टर्स में काफी वैल्यूएशन कंफर्ट भी दिखती है और कैपिटल प्रोटेक्शन की काफी संभावना दिखती है। बाकी जो सेक्टर्स है, कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, रेलवे, ये सब बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि सरकार कितनी स्पेंड कर रही है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि एलोकेशन तो हुआ है पर सरकार की स्पेंडिंग म्यूटेड है, और वैल्यूएशन बहुत जबरदस्त बढ़े हुए हैं लास्ट, मतलब आप 5 5 साल के अर्निंग खुद को डिस्काउंट कर रहे हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है। और मेरे हिसाब से यहाँ वैल्यूएशन करेक्शन, टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन या दोनों सब हो सकता है। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और शुरुआत में ही काफ़ी बढ़िया कॉन्टेक्स्ट हमारे सभी दर्शकों के लिए रखने के लिए। आगे और भी चर्चा करेंगे। इसी के साथ अवनी भट्ट जी भी जुड़ चुकी है हमारे साथ, उनका भी स्वागत कर लेते हैं दिवाली के इस शुभ अवसर पर। हमारे साथ रेगुलर भी जुड़ती रहती हैं, बहुत सारे हमारे शोज़ पे रहती हैं। अवनी जी, स्वागत है आपका। हैप्पी दिवाली टू यू, टू योर लव्ड वंस एंड टू योर फैमिली मेम्बर्स एट लार्ज एज वेल। टेल अस टुडे, एवरीबडी मस्ट बी जस्ट आस्किंग यू, आज क्या खरीदना है? इस 1 घंटे का जो टाइम है, जिसमें से अब आधा घंटा तो निकल ही चुका है, क्या खरीदना है आज के दिन जो कि एक मैजिकल टच दिलवा सकता है नए संवत में पोर्टफोलियोज को? बताइए। First of all, wishing the entire business today team and Manish sir also a very happy Diwali and a very happy New Year. So yes, Abhi, now for the remainder of this period, I think one can go for buying of Tata Chemicals. Tata Chemicals has given a breakout 8 months after 8 months of consolidation. It has given a breakout above 1140. So it has opened up today, and if at all we see any small kind of retracement up to 1140, one can accumulate the stock. One can keep a target of 1250 in a very, very short time, probably in a month's time, and a stop loss of 1100. और एक आध और नाम बताइए। So overall the view is positive from here on the BFSI space, and I think out of the space, I'm liking LIC Housing Finance. We've recommended that to clients earlier also. So LIC Housing Finance is one stock that you can accumulate in the range of 630 to 635, and keep a stop loss of 612, and you can target around 680 and 710. These are the 2 targets that you can look out for. Right. Let's get Manish into the conversation again. Manish bhai, in terms of deployment of fresh money, you've marked banks as one of the possible candidates where fresh money can come in. Within banks, would you have a preference? We've seen the public sector, 4 or 5 top banks coming back into shape after a 6-7 month rest. A lot of people have sort of lost hope on the top 4 private sector banks except for ICICI Bank in terms of giving better compounded returns. Within this space, where is fresh deployment most likely? So Shailendra ji, if you look at the numbers of banks which have come out so far, what have we seen? We have actually seen that household leverage from last year is under stress. You have seen MFI defaults, you have seen tier 2 banks actually make a lot of provision. And these sort of pain points don't really go away in a quarter or two. I would prefer large banks
And if you look at quarter two numbers, you are broadly seeing that, public sector bank, the large public sector banks, the performance is much better than the private sector bank. So I'm not the one who says that, it is only the private sector bank that should be bought. And one more data point is that incrementally you're seeing the deposit accretion is better than what we have seen in the previous quarter. So deposit accretion, marginal at the margin is turning slightly positive compared to the previous quarter. In that context, I think banks, large banks, where you have lesser MFI exposure, lesser unsecured credit exposure, would be better placed. It's not the time to dabble into small tier two banks. Large banks is where it is preferred, and I would go with both private sector banks as well as public sector banks. Valuations of public sector banks, even the large public sector banks, are roughly half. Even though the private sector banks themselves are quite cheap, but the valuations of public sector banks are literally half of that of private sector banks, large ones. And performance has been quite good compared to what profit growth that we have seen for the large private sector bank. Largest private sector bank has reported 5% earnings growth. The ICICI Bank has reported double-digit earnings growth. You have a bit of an accident in some of the other names where you have MFI exposure. So I think both public sector and private sector, no aversion to public sector bank where I see the performance better, but stick with the large ones. And obviously within the private sector bank, guys who have less exposure to MFI would be the preferred bet. Okay. Manish sir, I also wanted to understand from you, you did point out that there are several pockets where valuation comfort is still not there despite the 20, 30, 40% correction. Sectors like defense and railways, for instance, PSUs at large as well. How much more downside would actually make you feel that one can start looking at these sectors again? So, I will just lay the context between what happened in between 2020 and 24. In the middle of the pandemic, the government announced a whole lot of stimulus, right? Fiscal deficit numbers, targets were raised, which means that the government was hell-bent on spending quite a bit. And obviously, a lot of money was pumped into the economy. In that context, the entire PSU pack did very well. And you had a massive re-rating in terms of whatever the allocations to infrastructure sector like defense, railways, roads, etc. were made. All these companies did very well. Come 2024, the government fiscal deficit targets have been cut. That is to say that government spending is no longer happening. So, in order for these sectors to get re-rated, you should actually see the government come out and spend. And we have seen that consumption has really fallen off the cliff. We are not talking about, let's say, just the 3 days of Diwali or Dhanteras, or let's say beginning of Dussehra to the end of the festival season. We are talking about continuity of demand and consumption. You have heard the consumer companies talk about urban stress now. Rural stress is something which is slightly getting better at the margin, though it is very anemic. And now urban consumption is also a problem, both discretionary as well as staple. Now, in order for the economy to achieve this 6.5%, 7%, IMF still talks about 7.2%. The government has to come and spend. And obviously, the re-rating that has happened in some of this infrastructure, power related, or let's say defense and railways are discounting like 5-7 years of earning. Yes, I get it. The big picture is very fine. But, the valuation comfort still has room for correction of another 25-30% where you'll find margin of safety in some of these sectors. But I think the more important point is just watch out for what the high frequency data on a monthly basis that comes through, indicates. How is the core sector growth happening? What is the fiscal deficit number? What is the current account deficit number? What is the revenue collection? How is it getting allocated? And I think some of these things will become much clearer in Q3 and Q4. Till that point in time, I think it will go through a time correction, price correction, both. Because it's an over-owned sector, the last 1 year, overhyped, too much of over-ownership can go through sideways movement for another 25-30%. राइट मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। नववर्ष के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और जल्द मुलाकात होगी आपसे मुंबई में। धन्यवाद जी शैलेंद्र जी, थैंक यू सो मच। सभी दर्शकों को दिवाली की शुभेच्छा वंस अगेन। 2081 अच्छा संवत जाए हम सबके लिए, ऐसे ही भगवान से प्रार्थना है। थैंक यू। अवनी जी से चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अवनी जी नमस्कार, स्वागत है आपका।
टाटा केमिकल्स को मैं भी काफ़ी समय से ट्रैक कर रहा हूँ. अब बताइए एक दो ऐसे स्टॉक जो फ्रंट लाइन में आपको अच्छे लगते हों. कोई नज़र अगर आपने कंटेनर कॉरपोरेशन पर डाली हो, कोई नज़र आपने IRFC पर डाली हो. रेलवे के कई स्टॉक्स में शायद मध्यम अवधि का जो करेक्शन चल रहा था शायद वो समाप्त हुआ. बाकी आप बताएंगी. जी शैल जी, मेरा भी जो मत है वो मनीष जी से थोड़ा सा सहमत हूँ मैं कि ये सारे स्टॉक्स ऑल्दो हमने 35-40% का करेक्शन देखा है, फिर भी अभी भी कंफर्ट नहीं आ रहा है. वैल्यूएशन के हिसाब से तो उन्होंने बताया ही है, बट टेक्निकली भी अभी भी एक पुल बैक रैली हो सकती है, बट अभी भी कंफर्ट नहीं आ रहा है कि एक अच्छी खासी रैली हो गई हो या बॉटम हो गया हो. कम से कम शायद नया बॉटम ना बने, नया लो ना बने, लेकिन कंसोलिडेशन पीरियड डेफिनेटली खत्म नहीं हुआ है. टाइम करेक्शन काफी लंबे समय तक चल सकता है. तो ये ओवरऑल इस स्पेस में से फिलहाल कोई एक्साइटमेंट तो नजर नहीं आ रहा है, तो हम लोग थोड़ा अवॉइड ही कर रहे हैं. बट मैं आपको बता सकती हूँ कि जैसे व्यू मैंने बताया कि एक BFSI स्पेस में पॉजिटिव है. यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में एक अच्छी खासी उछाल आ सकती है, और उसमें से जो सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है वो है HDFC लाइफ. तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने ओवरऑल इस सारे जो पिछले 2-3 हफ्तों से पूरे अक्टूबर सीरीज में इनफैक्ट जो करेक्शन देखा है, इसमें भी करेक्शन तो हुआ है, लेकिन इसने कभी भी अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ज्यादा टिका नहीं है. वहां से सपोर्ट लेकर के चला है, एंड थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम देखे तो एक कंसोलिडेशन फेज में है. कोई नया लो नहीं है, कोई नया करेक्शन नहीं है. और जब ये मार्केट अभी उछाल देता है, जब भी पुल बैक रैली आ रही है मार्केट में, तो वी आर सीइंग अ वेरी गुड पॉजिटिव मोमेंटम इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक पिकअप. सो पॉजिटिव ऑन HDFC लाइफ, even from a short term as well as from a long term point of view. One can look for a target of 780 on the upside, और नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है 705 रुपए का. Okay, got it. Avni, very quickly, if you could also suggest any key mid or small cap stock that one should be really looking to add in the portfolios today for the new Samvat? So I wouldn't say a mid cap or a small cap really, but one can look for Tata Technologies. So Tata Technology is one counter that we really like for accumulating in the portfolio, and this is the right level to start accumulating. In fact, we are not even expecting any small dip, so I would say that you can go right away, go and buy the stock. And for within this year, in the Samvat 81, you could see targets of around 1200 to 1250 on this stock. So this is one stock that one can start accumulating right away. Right. Thank you, Avni, for your time, and here's wishing you a great year ahead. With us is now one of the best known stock pickers on the Lal Street, Mr. Sunil Shah, Fund Manager at SRE Portfolio Management Services. Namaste, Sunil ji, and a very warm welcome to you. Let's begin with the thought process as to how difficult or easy it is for you to pick quality multi-baggers, just as what you've done over the last 10 years. Yeah, Tenji, very, very happy Diwali. Wishing everybody a wonderful year ahead for all the listeners and for everybody who's participating in the market. Thank you, Shailji, for getting me on the show. So, yes, Shailji, the journey ahead is certainly going to be much different from what it has been in the recent past. And we have seen post-COVID, market has given one-way returns. In fact, Nifty has actually closed positive territory for 8 years in a row. And this is the ninth year on a calendar year basis that, we might end on a positive note. So before even thinking about the future, we should understand where we are today from the recent past. So A, the Nifty has given stupendous return. B, $100 billion of retail money has actually come in our equity market, which has also been a never before situation. So that's the way retail has participated in our markets. And on the valuation front, the NSE 500, the average valuation has been at about 27, 28 on a PE basis. And that same PE ratio has gone up to about 45 times. So valuation is also high. Retail participation has happened. Nifty has given stupendous return. So it's little bit being more cautious. If you look at from the lows of COVID,
market has become 3x in like 4 years or so. That is like 27% compounding. And portfolios of every individual would have been like 5, 6 times. And if you have a railway or a defense in the portfolio is about 7, 8 times or so. So given all that kind of return market has generated, let's tone down our expectation in the coming year. Let us look at reasonable returns and not try to look at recent repetition of the past. So I think thoda cautious. Let's be more sensible. Let's believe that markets can also correct. Keeping all those things in mind, we have to act now. So that is the way I'm looking at Chelsea. It is not going to be an easy journey for anybody who is having the investment mindset in the current year. Yeah, so I'm a bit cautious, Chelsea, unlike being very optimistic in the recent past. So just a change of stance. Let me put it that way. Okay. Suresh ji, warm Absolutely. welcome. So, 2 or 3 multi-baggers that you found out in 2021, 22, 23 were Garden Reach and of course the best one CDSL, as also Bombay Stock Exchange. Anything on your radar which is of similar tastes at current level which investors can add quietly and maybe wake up after 3 years to find maybe a 2x or a 3x return? Yes, Shailji. So, as we can see currently, growth in the numbers, in the profits is actually dwindling. So we have to visualize certainty of earnings. And one such pocket, which I think is going to be installation of telecom towers. BSNL is really very, very keen on, participating in the transition from 4G to 5G. So if we can identify a company which is in the business of telecom tower installation, there can be huge growth. So I think one such company which comes to mind is Suyog Telematics. Suyog Telematics is a very small cap company, I think close to about 1800 crores of market cap or so. The company Suyog has about 5,000 tenancies. It's like 4,000 towers which are installed, and management in the next 3 years is looking at expanding their tower base from 4,000 towers to 15,000 towers. So if they are able to install these towers, I think the top line of the company, which is close to at about 160 crores, can really go up closer to about 350, 375 crores or so. And the profit of the company, which is at about 65 crores, Suyog Telecom, in the next 3 years can go to 150 crores or so. So this is one such story which I think can play out. Obviously, my call is that BSNL is going to be aggressive, and they have come out with a recent announcement yesterday about installing 50,000 towers. So out of which 10,000 towers, if they are installed by Suyog Telematics, the company has got safer growth prospects. So this is one such, small cap idea where I'm pretty reasonably sure about the earnings. So I think that is the one which, investors can play out, and over the next couple of years, if things really work out the way in which, I'm anticipating, growth will be there, and that could be another good story for investors. So Suberg Telematics is one such stock idea strategy which I think can do wonderful over the next couple of years. Okay, got it. Suyog Telematics. So that's something that we will be continuing to focus on, Sunilji. Another thing that I wanted to discuss with you is, as far as the index itself is concerned, we've been speaking to a lot of market masters who've been saying that perhaps Samvat 2081 we have to keep our expectations really low with respect to the returns, because now in the last 2-3 years we've got used to of over 20% returns, which is much above the average as well that we are used to of seeing historically. So do tell us, what is your own expectation, one, on the index level? What is the target that you will be looking at for Samvat 2081 for the Nifty and for the Sensex? And where do you think alpha can be generated even if the markets on the benchmark level continue to be flattish? Yeah, so my thought is more from, looking at sectors and looking at ideas. I think the way in which one such policy decision is being taken from the government side, two sectors to come to my mind which can do wonderful. One is the shipping industry. Government wants to really develop the industry just like what they had planned for railways and defense over the last 4 or 5 years. So now, in the couple of months from now on, there will be one announcement about shipping policy which will be implemented, which could also bring in steps or measures like the PLI announcement in the shipping industry.
that will propel the growth of the entire sector. And India as a country has not even less than 1.5% share in the global fleet market. So we need to protect ourselves in the world in case of war situations or anything crops up. So we have to be strong on that front, and so shipping, controlling that particular segment is very important. So I think that is the area where one can look at good returns, which could be better than the Sensex or the Nifty returns. And the second pocket, I think, is going to be the oil and gas space. Even in the oil and gas category, I think all producing companies like ONGC and GAIL will have good prospects going forward. We have so much of proven reserves, and it's about exploring and producing those reserves. And if you see the government policies, they are working to tie up with global majors so that we can produce the proven reserves which we have. So I think ONGC and GAIL as a large cap idea could play similarly as the railways and defense have played in the last few years or so. So I think two pockets, shipping and oil and gas. So maybe we'll see the indices like the Sensex or the Nifty being flat or could deliver a single digit return from here. I don't want to give a target on both those indices, but maybe a single digit return. But this pockets of shipping and oil and gas could be the secret and the silent, outperformer in the times to come. So that's the thought process right now. All right. Sunil, before we let you go, what would be the final view on the possibility of an interest rate cut in the next 6 months or so? And how would you position a part of your portfolio towards that, if at all? Yeah, Shailji, on the interest rate cut, I think we are globally going to see really rate cuts happen. But when it comes to India, I'm not very much hopeful on rate cut. The reason being that once, in the world when the rates were actually inching up, we as a country had really not taken that kind of rate hike. So now when the world is reducing rates, we need not even look at reducing the rates here in India. Having stated that, maybe in the 6 months period, we could see a 50 bips rate cuts. The reason should be more to propel consumption and to more to incentivize growth within the country. So that could be the reason for us to reduce the rates by 50 bips or so. And if that is to happen, I think auto as a pack should be one which should start looking good, and we could see that as a sector which could be the beneficiary of the rate cut cycle as and when it starts. Apart from that, banking clearly will benefit because of the credit offtake which will propel up, but that's still some time away. So for me, I would like to watch for the event and then maybe play that particular thing of rate cut cycle. So that's the thought process shared right now. Right. Sunilji, thank you so much for your wonderful thought process, and of course we'll keep an eye out on Suyog Telematics on your behalf. Have a wonderful year ahead, and I hope we meet soon. Thank you, sir. Thank you for inviting me. Thanks, and have a wonderful year. Thanks, everyone. Okay, and just the right time to welcome Mr. Firoz Aziz, Deputy CEO at Anand Rathi Wealth. नमस्ते फिरोज जी, आप तो दिल के इतने अजीज़ हैं कि ये शो का जो आखिरी हिस्सा है वो आपके नाम है। दिवाली की अनेकों अनेक शुभकामनाएं, और संवत 2081 जो कि पिछले कई संवतों से आप ज़बरदस्त रिटर्न्स कमा रहे हैं आनंद राठी वेल्थ के कस्टमर्स के लिए, वो सबसे अच्छा बीते और धमाकेदार शुरुआत के साथ बहुत बढ़िया रिटर्न्स आपके सभी परिजनों को मिलते हुए देखें। स्वागत है आपका। I think okay, I guess Firoz has frozen right there. There is some kind of a technical glitch. It's okay. We'll wrap up the markets because just about a minute to go for the markets to shut shop. Yes. I think we'll just start looking at how the Samvat session or the Muhurat trading session is winding up. 92 points higher on trade for Nifty, 24,296. We're not too bad. All the sectors have actually managed to stay in the green throughout the course of this session, with the autos definitely driving in the fastest lane,
1.2% higher. Oil and gas, consumer durables, small caps, PSU banks as among those top movers with almost 1% gains on the Nifty. You have M&M as the top mover today, 3.5% higher in trade after those sales figures have been released. ONGC, Adani Ports, Bharat Electronics and Eicher Motors are among those top winners on the Nifty. I think we do have Feroz now with us. Warm welcome to you, Feroz, and happy Diwali to you. Happy Diwali, Feroz. Are you able to hear us? Yes, absolutely, Shakshi. I think there's something wrong technically from the network standpoint, but I'm so happy that I get to wish you and Shailji on this important occasion and on the eve of the new Samvat. Wish you and your viewers a great Samvat. And I pray your viewers also continue making money with experts and your comprehensive opinions of their experts and Shailji's important summary of everyone's conversation. नमस्ते फिरोज जी, तहे दिल से आपका स्वागत। आप तो हमारे इतने अजीज़ हैं कि जो शो का आखिरी हिस्सा है वो सिर्फ आप ही के लिए रखा, और आप ही हैं जो लंबी अवधि में बहुत ही आराम से सबसे कम मेहनत करके सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। पिछले 3 साल से हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं क्वार्टरलीज पर, और वैसे और लंबा समय बीत चुका है आपके साथ। अब बताइए, जिन लोगों ने अभी तक पैसा नहीं लगाया उन्हें क्या करना चाहिए? शैल जी, मेरे हिसाब से अच्छी बात यह है कि काफी लोगों ने पैसा लगाया और उसकी मात्रा बढ़ी, बट जो प्रोपोर्शंस हैं वो गड़बड़ाए हुए हैं। मेरे हिसाब से अगर कोई भी व्यक्ति 60 की उम्र से कम है और उनकी 40-50% इक्विटी में ना हो ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, जो कि काफी लोगों की नहीं है, उनके लिए ये एसेट एलोकेशन बदलाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। बाकी आप जो भी कर लें, आपकी रिटर्न डबल डिजिट नहीं पहुंच सकती। ओवरऑल बैलेंस शीट पे अगर चाहिए 50% को ना पार कर जाए आपका इक्विटी प्रोपोर्शन। ये मेरा मानना है कि ये सबको अपनी करेक्शन करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल एसेट्स के सिर्फ 13% इक्विटी में है, जो कि दुखद बात है। बिल्कुल, आपने सही कहा फिरोज, और बहुत ही सरलता से आपने ये कैलकुलेशन बता दी है कि जो भी 60 वर्ष से कम 50% तो अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का इक्विटीज़ में डाले, तभी आप बढ़िया रिटर्न्स कमा सकते हैं। अब आप ये बताइए कि संवत 2081 की शुरुआत हो चुकी है आज ही से, तो ऐसे में इक्विटी की दुनिया में कहाँ पर सबसे ज़्यादा अल्फा जनरेट करने का मौका मिलेगा? मैं आपसे ये इसलिए जानना चाह रही हूँ कि पिछले 2-3 वर्ष में अगर निवेशकों ने इंडेक्स लेवल पर भी निवेश कर लिया होता तो भी काफी बढ़िया रिटर्न्स उनको मिल गए हैं। डबल डिजिट से ज्यादा मिले हैं, 20% से ज्यादा मिले हैं, जो कि औसत से भी ज्यादा है। मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूं, क्योंकि ज्यादातर हमारे स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स जो हैं वो मान रहे हैं कि 3 साल के बाद जिस तरीके की मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन बढ़ रही है, शायद उस तरीके के रिटर्न्स इंडेक्स लेवल पर ना बने। तो अल्फा जनरेट करना है इक्विटी में, तो कहां पैसा लगाएं? जी, मेरा ये मानना है कि मैं थोड़ा एक अनकन्वेंशनल आंसर दूंगा। जनरली इस क्वेश्चन का आंसर सेक्टर्स या सेगमेंट्स में छुपा रहता है, बट मेरा मानना है कि एक पॉकेट है जो MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं 450, MSCI स्मॉल कैप इंडिया के इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स 462 करीबन हैं, और इंडिया के स्मॉल कैप इंडेक्स में 250 हैं। ये जो बचे 212 हैं, वो 212 काफी अंडर वैल्यूड है इन स्पाइट ऑफ द रैली, क्योंकि जो पैसा आया है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से आया है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इंडिया में बैठ के सिर्फ 250 स्टॉक पे अपनी इंडेक्स चलाते हैं, स्मॉल कैप इंडेक्स, NSE स्मॉल कैप 250 जो टियर 1 इंडेक्स है। बट फॉरेनर्स के MSCI स्मॉल कैप में 460 स्टॉक्स हैं। ये जो 210 स्टॉक्स हैं, इसमें अल्फा आने की अच्छी खासी गुंजाइश है। अगर किसी ने एक इंडेक्स बनाया MSCI स्मॉल कैप माइनस इंडिया NSE स्मॉल कैप 250, तो जो 212-215 स्टॉक्स बचते हैं, उनकी वैल्यूएशन देखो, उनकी बिजनेस ग्रोथ देखो, उनकी PEGs देखो, उनकी बैलेंस शीट्स देखो, उनकी प्राइस टू बुक देखो, वो काफी अच्छी है। दैट्स वन इंडेक्स व्हिच आई एम ट्राइंग टू क्रिएट एंड प्ले। ओके, फिरोज जी, उन लोगों के लिए जो ताबड़तोड़ तरीके से बाजार में घुसे और
लगभग 24-25 हज़ार करोड़ रुपए का जो मंथली सिप है, क्या उनके लिए ये चिंता का विषय है कि बाज़ार इस धमाकेदार मोमेंटम के साथ गिरे जा रहा है? 8% निफ्टी और 10% 11% स्मॉल कैप मिड कैप, अनेक कई सेक्टोरल इंडिसेस हैं वहाँ, तो मतलब बिल्कुल ही आप समझिए तबाही मची हुई है। डिफेंस का इंडेक्स 50% रह गया, तो उन लोगों के लिए आप क्या राय देते हैं? शैल जी, उनके लिए मेरी ये राय होगी कि घबराएं ना। लास्ट 24 साल का डेटा हमने देखा, क्योंकि 24 साल जीना, 24 साल बहुत दिन होते हैं, 8,000 9,000 दिन होते हैं। 24 साल अगर एक एक्सेल शीट पे जीने की कोशिश करो तो एटलीस्ट वो आप संक्षेप में समझ सकते हो क्या क्या होने की संभावना है। इक्विटी मार्केट ने हर 9 महीने में एक बार 10% गिरने की हैबिट दिखाई। तो ये जो 8-9% की करेक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है, क्योंकि जब ये करेक्शंस होती हैं तो मार्केट में जो स्टॉक हल्के हाथों में होता है वो मजबूत हाथों में जाता है। तो ये करेक्शन की वजह से कंसोलिडेशन जो आती है उसमें ओनरशिप पैटर्न्स काफी इवॉल्व होती। तो ये मार्केट एवोल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, दिस करेक्शंस। ये मेरे लिए बहुत अहम हाईलाइट करने की बात होगी। दूसरा, रिस्क को कोई भी नया निवेशक जो कोविड के बाद आया है वो रिस्क को इतना नेगेटिवली ना देखे, रिस्क को थोड़ा पॉजिटिव देखिए। रिस्क की वजह से हर साल कोई ना कोई रिस्क होता है। 2014 में इलेक्शन था, जनरल इलेक्शन। 2015 में चाइनीज ने अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर दिया था। 2016 में डिमोनेटाइजेशन आ गया। ऐसे ही हर साल आपके पास कुछ ना कुछ रिस्क होता है। इस रिस्क को मैं अपने इन्वेस्टर्स को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको पॉजिटिवली देखो। अगर रिस्क खत्म हो गई तो अगले 10 साल की रिटर्न एक साल में आ जाएगी, फिर करोगे क्या? राइट। सो रिस्क की वजह से ट्रेन रुकी हुई होती है। सो सी दैट लिटिल मोर पॉजिटिवली। पॉइंट 2। पॉइंट 3, पैसे, जैसे आपने कहा शैल जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही कि डिफेंस इंडेक्स आधा गिर चुका है। ये काफी लोगों को आदत नहीं थी, और बट एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करने वालों के लिए तो गुड न्यूज है, क्योंकि वो सेक्टर फंड ज्यादा नहीं खरीदते। ज्यादातर पैसे डिवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में आते हैं। 25,000 की एसआईपी। और एक स्टडी मैंने की शैल जी, बहुत हैपोथेटिकली की। लोगों से पूछा जो डेरिवेटिव करते हैं, 8 में से 10 में से 8 लोग जो डेरिवेटिव करते हैं वो एसआईपी भी करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों सेट जो हैं, जो डेरिवेटिव से भी घबराई हुई हैं, सही बात है, और एसआईपी जो कर रहे हैं वो दोनों अलग शख्स नहीं है। डिसिप्लिन को भी कोई आदर सम्मान कर रहा है, और वही इंसान अपनी एड्रिनल को सेटिस्फाई करने के लिए थोड़ी सी गैम्बलिंग भी कर रहा है। Okay, that's a interesting point to note right there. We will be keeping a track on that. But Firoz, also help us understand, this year, this Samvat has actually been a great one for most asset classes. If we talk about equities, it's been a wealth creating, asset class. Gold and silver have outperformed. Silver has come up, beyond expectations as well. 1 lakh rupees per kilogram is what we can see. Bitcoin, if we consider as an asset class or not, is like a debatable, but it's again given 70% returns as well. Real estate, you'll be able to tell us more as to how people have really made money right there. We've already seen headlines of 100 crore rupee plus flats being sold at the drop of a hat across Mumbai and Delhi. But of course returns is something that we can understand from you. In Samvat 2081, where do you think between the asset classes the outperformance can come in, or what could be the ideal allocation so you can actually have the best of all? Yes, mere hisab se, I like you rightly said, all asset classes have done well because there's been more money in the market than what can be absorbed by these assets. So asset inflation has been something which is of the last 2-3 years. You see a lot of asset inflation, not just commodity inflation. So that's happened is when you see all assets painted in green. When that happens, it's more money chasing these assets than the fundamentals of the asset attracting the money. So you're so right. The observation is so apt. Now coming to from a futuristic standpoint, which is the asset which can do very well? I certainly believe equities will continue to do well because of its diversity. See, gold is just one ISIN,
one variable. Silver is one variable. Bitcoin is one variable. Maybe some 10 other cryptocurrencies, which would be called large cap cryptocurrencies, which the crypto lingo uses. But when you look at equities, equities got about 2,300 ISINs listed on NSE. And if you add mutual fund managers, 632 fund managers managing 632 funds, you have very large diversity in equity. So if somebody can be a little more microscopic and listen to Shailji, will be able to get directed towards a portion of equity which can do well. Like I was hearing Sunil sir, he was saying in a flattish market on the headline number, which will be the two sectors which can still give him the extra return. So equity has opportunity each year, may not be at the headline, but in the fine print. So I would still vote for equity, and 60-70% of your money in equity for 5 years plus monies is a mandatory thing. I think silver has done beautifully well from a return standpoint, but you look at the volatility measured in the form of daily standard deviation was 43% for the last 1 year, which is 2.5 times that of Nifty of the same period. So any kind of return does not justify that kind of standard deviation. So I would not bet on silver. Gold has been far more lower on standard deviation. So that will continue to have about 10-15% because I'm not as bullish on debt. So if anybody has to replace debt, I would still say gold. I don't buy the theory of interest rate correction resulting in capital gains in debt yet. Right. And Sakshi, you forgot to add one asset class. I'll request the PCR to fire the longer term chart of Anand Rathi Wealth. In the last 365 days, Sakshi, the stock has appreciated only 137% from 1,800 rupees to 4,100 rupees. And the person majorly responsible for that wealth creation is with us. Feroz, now comes for us the difficult part, but for you the easiest part. What would be fresh allocation to funds? Maybe 3 or 4 names that you can share with the allocation percentages for our viewers who want to start a new portfolio. Yes, Shailji, quant large cap would be my large cap bet because its concentrated nature. That has so far over the last couple of months underperformed Nifty by 4%. Of course, at junctures like this, you may not have the courage to buy that scheme. Last year, it outperformed Nifty by about 20%. It's in a trough kind of a phase. I personally think Sandeep Tandon manages it from a risk on and a risk off perspective. Whenever there is risk off, he's going to underperform. When risk on, he'll outperform. After a correction, you will see these quant funds always do better because of their risk on and risk off method of managing money. So that's one fund, quant large cap. Then in the flexi cap category, you can continue with the HDFC flexi cap, which has been a part of our recommendation. And in the small cap category, Invesco small cap, and in the multi cap category, Canada Robeco multi cap. These could be the 4 funds which one could choose this Samvat and hold it for a few Samvats, not just one. Okay, which was the last one? Canada Robeco multi-cap? Yes, sir. Yes, Shail, sir. Sri Datta is quite bullish on this, who's the CIO. It's a smaller fund and in that bucket. Fair point. And 25% each, or would you be skewed towards large cap? No, so I think 25% each because the flexi cap and multi cap have reasonable proportions, the large cap too. Fair point. And one final question from my side at least, which is the percentage that you would allocate to gold and silver from current levels. 15% in gold if you have any conventional debt. If you have 30% in conventional debt, half of that conventional debt money can go into gold. 15%. Okay. Wonderful. Okay, just last 2 minutes to go before we end it. What is going to be the message from you, Feroz, for all the retail investors who are actually seeing this kind of a correction for the first time in their lives? We all know a large part of these investors came in after COVID and it's been just a one-way upward rally journey. Any sort of a roadblock that we saw throughout this year, and there were many,
we have bounced back sharply, went on to higher prices just within a matter of days or weeks. It has not happened in October, and this is leading to a lot of loss of confidence among the large first-time investors. What is the message that you will part on this show with? If I have to summarize what comes to my mind as a message is, see, you can't stop the waves. You have to learn to surf. That's what equity investing is all about. So I would say leave that thought, saying that you can't pray that the waves will go away. Just learn to surf, and it's going to be a great fun ride in equity without anxiety. Okay, wonderful. Well, here's wishing you, Firoz, a fantastic Diwali and upcoming year ahead as well. We hope that you continue to create a lot of wealth for yourself, for your loved ones, and for your clients as well going forward from here into this new year. And you keep on, joining in on the show to share all this wisdom throughout the course of the new Samvat with all our viewers on various shows, which we will be inviting you more often this year, as has been our promise. Warm welcome to all our viewers for this new Samvat 2081. We are hoping that this green stays on for the next few days, months, weeks, as well as the year ahead as well. Thank you so much for being with us on this Muhurat Trading special. It's a goodbye from both Shell and me on this one, but do stay tuned. Business Today Television will continue to get you fantastic conversations, insightful and engaging conversations with top market masters and the best of investors, ace investors at large, to help you and to guide you throughout the journey of your investments. With that, we wrap up this Muhurat Trading special. We will be back on Monday morning now with another edition of Market Today. So stay tuned for that and much more. Hope you have a fantastic day as well as the weekend ahead of festivities. Ayodhya scripts history once again.